दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसी के हवाले से बराह रास्त समाअत का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है इस हवाले से समाअत कर रहा है। बराह रास्त मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, जहां पर इस हवाले से समाअत जारी है। पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसला आया था उसी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर यह समाअत का सिलसिला जारी है। 1 to 8. And what about 9 and onwards? They are the. Just run through the names. Ji. We don't want to make a mistake. Raja Tahir Nawaz Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No. 1 to 8 you represent. Ji. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent. Then they've added pro forma respondents. You don't represent. I don't represent them. Okay, fine. Chale, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing. And I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with the unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point or the same one? Just ending, closing it now. This, right. Denying an electoral symbol based on
alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its malafide is apparent on the face. Malafide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed
or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23. Directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms 65
which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing for on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order. It was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IPE was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And
and no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you, yesterday Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that, and I may repeat for your benefit that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that
is said on the media or social media, but your stance is that there is malafide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now, you must show such malafide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come. If we can just start with 14 members, destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. जी. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा इन सब चीजों को,
तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था। बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना, जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन। जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते, और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है। उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आई गॉट दैट। You may ignore the, with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because every election we will find some this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी, ठीक। So your lordship, coming back to my point, so एक order है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था। They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह। So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly, but for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन, वो तो हमने नोट कर लिया जी, आप प्लीज प्रोसीड। Now, what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी। No, let's, but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol, when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं। At least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं। But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol, तलवार। फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया, फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things, then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any action will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition, we argued, which we pressed it in 12 days, we got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there, it's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside
unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। दरअसल आप ये malafide का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूँगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. नहीं, I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact in law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of... you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was, the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party
had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. Ji. But So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश करने के जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में. मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन. I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना. Not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना. वो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज. पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 पेपर बुक. ये पेपर बुक. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो. According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, an elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under.
all decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, not on the question कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, not on the question कि आपकी शेड्यूल. अली ज़फर साहब जी, that is what I'm saying. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी. आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं.
مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ صحیح تھا یا نہیں. اب وہ ہائپر ٹیکنیکل چلے جائیں یا وہ آئین کی بات کریں یا وہ بے نظیر بھٹو کے کیس کی بات کریں, وہ سارے راہ ہیں. نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ سمپل سا تھا کہ الیکشن کیسے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے تم اب سمپل سی بات تھی, اکبر ایس احمد صاحب اگر اتنے ہی ان کی سپورٹ نہیں ہے, ہار جاتے الیکشن, اور کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی بات ہمیں دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوئے یعنی آپ کی پارٹی میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ, اور یہ اس کی اہمیت, اب یہ ہم بات کرنا چاہیں گے, اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو آپ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں وہ فی الحال جیل میں فیسنگ ٹرائل. تو کل تو کہ یہ لوگ کون ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں؟ یا تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ لوگ فاؤنڈنگ ممبرز تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے الیکشن تک نہیں لڑنے دے رہے ہیں, شاید بہت برا ہو, آپ کو نہیں پسند ہو, مگر وہ الیکشن کو اس کو رائٹ تو دے دینا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں, وہ آپ کے اندر گھر والا کہہ رہا ہے تو مجھے تو کرنے دو نا, میں کیوں نہ پارٹی کا ہیڈ بن جاؤں. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. ہار جائے جیت جائے, اگر آپ کے 8.5 لاکھ ممبر ہیں ان کو پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ بتا دیں. اور اگر آپ نے کر دیا ہے بھروسہ, وہ ہمیں کچھ تو دکھا دیں نا ہمیں کہ واقعی کچھ ہوا تھا. کاغذ کا ٹکڑا, کل سپوز اکبر ایس احمد ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آتے ہیں, اس پہ آپ کی پارٹی کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور الیکشن اپنا نام لکھ دیتے ہیں انپوز. تو ہمارے پاس 2 کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے, کس کو ہم مانیں گے؟ تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کے کر دیا, میں نے تو جا کے الیکشن نامینیشن پیپر تھا, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر دیا, اتنے ووٹر آئے تھے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکا ہوں سر, میں آپ نے پہلے بھی ریپیٹ کیا. میں اب وہ اس طرح سے چلا گیا الیکشن کمیشن یا اس طرف, میں بالکل, میرا خالی پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن ہم تو بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوئے کہ آپ الیکشن, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیموکریٹک بنا رہے ہیں. آپ کی بالکل بجا بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. دیٹ از آل دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. سو کمنگ ٹو دی سمبل سے, ظفر صاحب جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. یہ جو ججمنٹ از امپیون بیفور اس has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشو آف دی ججمنٹ ہے, they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra party election. So پہلے ہم نے وہ تھریشولڈ کرنا ہے کراس. دوسری ہوگی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, جی کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. Then you have to show from different provisions of law that is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے تو then there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly, that is my point. لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں گے. اب آپ ایک ججمنٹ, اب بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. اگر آپ کوئی خاص مخصوص پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا that is where I'm going first. ٹھیک, یہ الیکشن میں دیکھنا, ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے. جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. there is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجئے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, but if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, the petitioners have questioned the impugn order on legal as well as factual premise.
However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इंट्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना, फिर तो मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। I will show that। तो फिर कैसे रोल नहीं है फिर वो फिर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है जिक्र है, that is what I will show today कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो भी करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। There is a पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, but that doesn't mean that election commission can look into that and say कि ये सजा होनी चाहिए या नहीं। It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप। Let me come to my first point then। हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पेशावर के अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ जाती है। मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल। सिंबल तो लिया हमसे, पेशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना। नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन हमने कराए, मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले। क्वेश्चन इज, कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो, even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा letter does not confer jurisdiction sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं। उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। ये उन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी। बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया। परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको, वो हमारे सामने आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इधर से आगाज करें शुरू से। मैं शुरू से कर रहा हूं सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। ये तो कहने से तो नहीं होगा, कानून का लेट अस स्टार्ट सर, लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन, बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है सर, शुक्र है। सो लेट अस स्टार्ट विद सर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें जो पहला रेलेवेंट प्रोविजन है इज आर्टिकल 218। ECP को बनाया गया आइन के तहत फॉर सर्टेन पर्पस, एंड जो रेलेवेंट उसकी 2183 में ड्यूटीज दी गई। 2183 में जी, और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against.
نہیں دیکھیے ایک بات، یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے، یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جنرل الیکشن کی. بالکل. یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو، اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with پارلیمنٹ me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں، اور یہ بات ہے، اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. نہیں 219E 218(3) doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 218(3) does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election all it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے. پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا، دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر. بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ کو، پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لاء میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن. آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں. بٹ مائی پوائنٹ از دس، آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک. That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ آئیں گی ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی، یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. اینڈ 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ صرف 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے، وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں. مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر. آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی. میں ابھی آتا ہوں صرف نہیں دیکھیں پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں، میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں، اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں. وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے، بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے. آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے اس میں کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے. الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی، اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی ریگولیرٹی ہوئی تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی
case before this ون court. آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میں میکینزم پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. تیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شو کاز آپ کو بلا سکتے ہیں. دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 2091 پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر. آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی Formation of a political party. نہیں, وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, اب ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this You does will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں, 208 پڑھ لیں. سے پہلے 200 کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. That is 207 پہ یہ is my comment and my submission. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 2081 The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels wherever applicable shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو office bearers ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, election ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ان کی ریگولر کرایا. پڑھیں گے نا, وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا ارریگولر, انہوں نے کرائے لیکن ارریگولر. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی, بالکل دی, یہ فیکٹ. میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in تربت. جی آپ کا کہنا یہ ذرا سمجھ لوں بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ. Correct. ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. Right. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir, it can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اگر دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے, دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی
पॉइंट अपना, हम भी तो, हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट का सरांखों पर, ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं। हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना, अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं, कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई। 3 ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा। जी मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं। हम देख रहे हैं कौन सा अदारा, मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने। प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस। जी अब आप 209 पे आ गए। नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है ऑल, अब इसका इसी 208 में जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम, ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ईसीपी को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड। 2 लाख रुपए की जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की। जी पढ़ी है ना, सब सेक्शन 5 में ही है। सब सेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show, यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, not irregularity but करे ही ना, a show cause will be issued। उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सॉरी जी, 5 subsection 5 of 208, 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered। आपका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं। अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया, अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके। अगर आप इसको पढ़ें दोबारा गौर से 5 को जी, विद इन टाइम जी, तो ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में कर, उन्हें 2 लाख की पेनल्टी लगा दी, ठीक है। यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, फेल्स टू कंडक्ट सर। अब विद इन टाइम देखिए, वेयर पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल का, आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर नहीं, अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है। तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं। ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा। तो आगे आ रहे हैं ना जी, चले आगे देखते हैं। 208 में नहीं आ रहा। आप 209 पढ़िए पहले। अब 209 पढ़ते, क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना, अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना। तो वो 208 वाली बात खत्म है, बिल्कुल सही, तो खत्म हो गई। दैट इज माय पॉइंट। 208 वाली बात खत्म है। उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे, नहीं लगाया, 1 साल दे दिया, मैंने इलेक्शन करा दिया। So 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ठीक है जी। अब आप 209 पे आ जाते हैं। A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections,
submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी। ये अब ये क्या कहता है? 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल है। उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक और मैंने आपके कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 65 फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना है। पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन। नाम क्या ये तो इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो ये तो बात की बात है ना, उसमें आया है। जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन ये जो नहीं देखिए जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है। ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ। स्कीम यही है सर, स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है हर चीज जाती है इलेक्शन पे जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना। ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त कौन था? who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा, असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं अगर देखिए, अगर मेरा पॉइंट अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दे, बाबू हरा दें उसको ना। एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो अभी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका भी जवाब हमारे ज़हन में जो बात है बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है। किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद कानून वो इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को, प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। दिखा देना कहीं लिखा हुआ ऐसी बात। वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूँ, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे हैं ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और मैंने नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है। और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 215. I will sir, 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are bound by the law because सही है, वो exactly 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But तो now इलेक्शन को तो कमीशन को तो इख्तियार नहीं। constitution of your own party कि ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं। फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 के तमाम ये कंडीशन। सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है। It is not to be given by the election. ये ऐसी बात होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया।
پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. تو میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I'll read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جورسڈکشن نہیں just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215 پڑھ لیتے ہیں نا, پڑھ لیں. jurisdictional issue ہے. ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information. A. The date of the last intra-party elections. B. The names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C. The election results. And D. Copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج پہ؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں, certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھتے ہیں. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی, اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17, 18, 19, 20, 21, 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں جی. لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں. تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا سر. 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گنے 17, 18, 19, 20, 21, 22. 13/22 کو ہوگا نا سر. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے before the date. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں, وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی. تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. Let us move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا. لگا ہی نہیں سکتے نا اب. یہ نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ ووٹ تو جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے, یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. مگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم از کم جنگ ہوتی ہے کہ وہاں بھی اگر نہیں ہوئی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں. آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں. مگر مجھے کوئی ایسا سیکشن 73. ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پارز ایٹ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں اس میں 2-3% شاید ہوں گے انپوزڈ جی, ٹھیک ہے جی. وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی انپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران جی, سب ہو گئے انپوزڈ جی, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب
چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی انپوزڈ آ رہا ہے. تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. سر اب یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن انپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتہ چلا کہ الیکشن انپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتہ چلا کہ اب آپ نے جو یہ سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. PTI has one huge leader which is عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پرابلی. جی آپ نے تو اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پرابلی ایڈ کر کے. جی تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود نہیں, اگر سوری جی پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں. وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا. That does not make the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی, ٹھیک ہے, 326 کا میں انپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چڑھتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی کو اچھا آپ نے کل حامد خان سے, وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز? He has got more stature than you. Of course, I'm nobody sir. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not. آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ لیکن پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا. یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی پہ تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیے, دکھائیے نا. یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا, دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ ایک دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن
کدھر ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے اس پیج پہ اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, پیج بتائیں گے. ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو, ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے اس میں نہیں, ایسے ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا نا, یہ الگ سے دے رہے ہیں جی ہم کل آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ, بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر, ٹرمینیشن کمنگ بیک, نہیں کمنگ بیک نہیں, شو اس فنش دس پوائنٹ, وائی یو اگنورنگ آور کوسچن. نہیں ہے ہماری پارٹی کی, میں نے آپ کو بھیجا تھا سر وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں, سیکشن یہ 201, this is how members are to be followed. اچھا سر, according to my instructions ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈ بھی ایشو ہوئے ہیں, فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے, وہ سب کے نام آپ کو اس میں آ جائے گا. دے آر ووٹر ممبرس, دے آر دا پیپل ہو آر انٹائٹلڈ ٹو ووٹ. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. سر ویب سائٹ کی کاپی میں نے کہا, ویب سائٹ از ناٹ ایویڈنس. نو دین دیکھیے ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ان کو کہتا ہوں ابھی کہیے نا, آپ کیا سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے, کل آپ کو بلا خاص طور سے ہم نے سوال بار بار کہا کہ آپ اس پہ آ جائیے, وی ناٹ ٹیکنگ یو بائی سرپرائز. آئی ایگری سر, اچھا پھر آئی کانٹ ٹیک دیٹ ڈاکیومنٹس آپ ریزیوم کر لیجیے. نہیں اب آپ دوسری بات دیکھیے, میں اب 209 پہ آ رہا ہوں. نہیں 209 سے اب آپ نے جو بات کی ہے نا 205 پڑھیے, 215 ہے, نہیں 205 پڑھیے جی. یہ تو مرضی نہیں کہ آپ جس کو نکالنے ممبرشپ سے. The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So یہ انٹرنل معاملہ ہے. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, it's, you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ٹھیک ہے سر, if I can't show تو آپ assume کریے گا کہ he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ٹھیک ہے. If you are it will not change. if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. Dekhiye Ali Zafar Sahab, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, کوئی irregularity نہیں ہوئی, but the بنیادی بات ہے کہ الیکشن ہو گیا, ختم. یہ لوگ آئے, یا تو الیکشن کمیشن خود آتا, اب یا تو کہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا یہ کبھی آپ فرنٹ مین بھی بنا دیتے نا, فلاں مسٹر آ گیا, فلاں مسٹر آ گیا. تو یہ تو ایک پرانے ورکر ہے آپ کے, جو بھی فاؤنڈنگ وہ کلیم کر رہے ہیں. کل حامد خان صاحب نے کیٹیگوریکلی اس کا, ہی از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس. سو 14 لوگ اگر سمجھ آئے تو بھائی اتنی سی بات ہے, آپ جمہوریت تو لے آئے نا گھر میں. صحیح ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو 209, ایک آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ آپ کے ممبرس نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں ہو گئے, مان لی ان میں بات. کیوں, تو پھر اگر مان لیے تو پیرا 11 جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے انڈر اوتھ آپ نے کہا ہے کہ they are not our members. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, دونوں باتیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں they're not members, my statement may be recorded. آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں. سیریسلی there must be some evidence. آپ کہہ رہے ہیں ثبوت دیں. There must be some expulsion. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ثبوت دیں, ہم کہہ رہے ہیں کمپلائنس, شو کمپلائنس ود سیکشن 205. تو میں اس پہ اب آگے جا رہا ہوں نا سر, وہ آ رہی ہے, اگر نہیں آتی تو آپ پھر اپنا جو پرزمپشن کرنی ہوگی آپ کر لیجئے گا.
मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स। आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं। more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर। 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. अब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए। इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। Easily पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल। ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है। 2151 Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Masjid-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे। okay, ठीक है जी। A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged whether the validity of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the 216 भी पढ़ लें। I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं with the interpretation. जब आपकी मुझे नहीं पता पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है मगर कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करेंगे, मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट तो 5-7 मिनट करना चाहिए, 2 घंटे हुए जब थोड़ा सा और कर लें लंच ब्रेक। Application for allocation of symbol. See, I didn't because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain
the list of वो symbols, skip करें, अब 17 पे आ जाएं, 217 पे. allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात, जी. if the political party complies with the provisions of this act. सही है. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली जफर साहब, वो बार बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप जो कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम तो उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है, बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की. सर लेट अस नाउ, देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है. जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है. फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी. अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया. पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया. अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई एक दूसरे से, बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया, सब कुछ आया. तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना. हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं. बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस. ठीक है जी, ये सर. अच्छा अली जफर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स, अली जफर साहब एक मिनट जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ? हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है, तो ये मखसूस लोगों को कैसे पता लगा कि ये डेट है फॉर्म जमा कराने की, उसी डेट पे स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग वाज डन? अच्छा एक काम करें आप जरा, कंप्यूटर जिसके पास है ये जरा चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट है insaf.pk, या आपके लिटरेट पे लिखिए www.insaf.pk. कोई नॉमिनेशन पेपर है इस पे? सर नॉमिनेशन पेपर जी योर ऑनर फाइल कर नहीं, ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें www.insaf.pk खोलें. क्या वेबसाइट नहीं है ये? योर ऑनर जी, अच्छा वेबसाइट है, मुझे बताएं. ये वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइट खोलें. ये मैं आपको सर एक CMC, एक सेकंड आपकी वेबसाइट पे देख लेते हैं. बोलो.
नॉमिनेशन फॉर्म ओके नहीं है ना, फॉर्म तो नहीं डाले होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं डालते, डाउनलोड करके भरना होगा ना। हाँ, स्पेसिमेन जो है, हाँ जो स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन नॉमिनेशन स्पेसिमेन अब हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, हम वो दे देते हैं कि जिसको अप्लाई करना है लॉ क्लर्क्स के लिए वो पेज 34 पे जो आपको पेपर बुक दी है सर, ब्लैंक फॉर्म जो इस पे तो पेजिंग नहीं है, कौन सी पेपर बुक? आप कह रहे हैं 8.5 लाख मेंबर्स हैं आपके, अगर 8.5 लाख में से अगर किसी को भरना हो फॉर्म, वो वेबसाइट पे नहीं है आपका स्पेसिमेन। एक आप ना बोलिए ना, टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द वेबसाइट, ये कह रहे हैं सर द ब्लैंक्स। जी, वो ये कह रहे हैं कि जो अली जफर साहब, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ना, आप हमारी वेबसाइट अभी खोल लीजिए जी, जितने मुलाजमीन कोई नौकरी की हम फॉर्म डाल देते हैं, स्पेसिमेन फॉर्म, कि अब ये नॉमिनेशन पेपर है, खैर हमारा तो इलेक्शन नहीं होता, हमारे जो एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कोई फॉर्म नहीं है सर। जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन्होंने, इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं, ये फैक्ट की बात है। वो के वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आप खुद हैं पार्टी। नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल थे चारों सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज में, जो इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर थे, और नंबर दो वो वेबसाइट पे भी थे। अगर आप इजाजत दें, अभी खोलिए, आपके सामने दिखा दें वेबसाइट, आप क्लिक करके हमें दिखा देना। अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वेबसाइट से हटा दिए गए, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये वाला प्रोसेस जो है, जिस जगह इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा इस एप्लीकेशन, आपका जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का, सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू हो, ये सही बात है, उसी दिन नॉमिनेशन डालना है जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो आदमी वहां से क्वेटा वाला ने फॉर्म लिया आपके लोकल सेक्रेटेरिएट से जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आपने बताया दुनिया को कि आप हमारे लोकल सेक्रेटेरिएट से कलेक्ट कर लें नॉमिनेशन पेपर? सर वो जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं, दे आर फुली अवेयर ऑफ वेयर द ऑफिसेज आर, लोकल ऑफिसेज आर। हम देखें, जबानी बातों पे नहीं जाते, तो आप इतने वाइड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कोई बैकिंग, कोई कागज का टुकड़ा कुछ तो दिखा देना। तो वो दिखाएं कि जी आप जाके वहां से कलेक्ट करो, वो क्वेटा वाला फिर उसको जमा किधर करेगा? इस्लामाबाद में करेगा, क्वेटा में करेगा, कहाँ फेंकेगा? नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद से आएंगे, फिर वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा उसको। That is the process of the election. नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव, आपका इलेक्शन शेड्यूल है जो मैं दोबारा देख रहा हूँ जी, ये 29/11/2023 को ही रिलीज हुआ है जी, इशू हुआ है जी, और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी उसी दिन को इनवाइट कर लिया 29/11 को ही जी, और नॉमिनेशन फॉर्म को रिसीव होना है 1/12 को एट इस्लामाबाद जी। So there were 3 days, और किसी को भी रोका नहीं हमने। They were also available sir। फीस कितनी थी? वसूल जो है ना वो नहीं लिखा। फीस कितनी? 50,000, 50,000 जी। हाँ 50,000। अब देखिए आप 80,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी आपके शेड्यूल में। जी, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे? किसकी कैश पे कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है? अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना। बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हमने प्रोसेस। उसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,012 को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे ये, मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए प्रोसेस जो है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको आप प्लीज, क्योंकि देखें लॉ के मुताबिक चलना है, वैसे अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो। सर ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, आप देख लीजिए, आप उन पे बर्डन ना डालिए, वो हम आप पे रखना चाहते करते हैं प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, अपना शेड्यूल है, प्रोसेस क्या है, आपसे बात हो रही है ना, इट्स तो मैं अगर मेरे से बात हो रही है सर तो लेट अस स्टार्ट विद देख लें साथ खड़े में आपके, बेशक देखें ये तो पेपर आपके हैं, हम अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये है 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी। अब आप पढ़े पहले ये देखिए जी, 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है। चले मान लिया ये पहले दिन हो गई। एक सेकंड यार रुक जाए सर प्लीज, वन बाय वन। 29 को इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। प्लीज लेट मी explain to you, right. You can answer that. ठीक है। Number 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad. ठीक है। For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान में राना महमूद हसन साहब, राना ताहिर शबीर साहब, राना इकबाल साहब, हमारे सब दोस्त जो है, शाहिदुल हसन साहब, सब दोस्त जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ानदान में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, हम एक सियासी ख़ानदान है और हमारा जो ताल्लुक़ है इस शहर मुल्तान के साथ, आपको मालूम है ये अब 3 नस्लों से चलता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के जदोजहद करेंगे। हम मिल के जब जदोजहद करते हैं तो हम ना सिर्फ मुल्तान के आवाज़, पूरे मुल्तान की आवाज़ बनेंगे, मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे वसेब की नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते के लिए, हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है वो आपके सामने है। गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब की जो जदोजहद है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद भी जारी रहेगा। मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये एक वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम कारकुन, तमाम ओहदेदार घर घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनके तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं। हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो। हम चाहते हैं कि सेहत की इलाज, जैसे हमने सखर में CVD बना दिया, वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ मुल्तान में इस किस्म के इदारे हो। हमने जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे ताकि वो खुद वो रोज़गार के मौके के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं तो कि तीर के पे तफा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सकें। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا. اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. آپ اس پرانا سیاست کو, اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. پہلے تھا عمران خان لاڈلا, آج کل ہے نواز شریف, اور بلاول کب ہوں گے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرا بھائی نے بات کیا ہے پیچھے, ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لاڈلا بنے. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ ایک ہمیں جو میرا آپ کی ذات سے ہے, آپ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ مل کر چلیں گے, پرانی نفرتوں کو بھولنا ہے. نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, آپ کے فادر ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آپ کے نانا, ان کی جو لیگیسی تھی جس کو لے کر آپ چلیں, کیا آپ کو اتنی ضم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں, تو اب اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی, صرف الیکٹیبل کی بات ہوگی, الیکٹیبل لے کر آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے, آپ نے تو ایز این الیکٹیبلز کا کیا, ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں, اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے, سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے. اور اب اس بات تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو, ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کی مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے طالب علم کو, پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. آپ محنت کر رہے ہیں پنجاب میں, خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں, اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے, اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزنشپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے, اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے, ان سب سے پوچھنا ہے, ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس مشہور ہے پلان ہے. دیکھو, جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے, اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو. اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے, ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے, اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم, جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے
13 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश खान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता तो फिर शायद हम मज़ीद बेहतरी लेकर आते। आपके दोस्तों ने, रावल साहब, आपके दोस्तों ने बात की है सर, मुल्तान से आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गया है, इसको कहाँ तक जाता देख रहे हैं, तो किस हद तक? सर, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में मिले या ना मिले, हम अपना लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी पिच मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम तो इनको कहते थे जब हम हुकूमत में थे कि चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, पीछे ना हटे, डट के मुकाबला करे। तो आज भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर पीपल्स पार्टी का भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सराइकी सूबे की बात करती है, सराइकी सूबे को मंशूर में शामिल किया। आपने खुद इतराफ़ किया कि गिलानी साहब के दौर में सारा सिलसिला हुआ। आज जो टीम आपके साथ शामिल हो रही है, इसका बुनियादी मोटो ये है कि इस खित्ते को इसका हक मिलना चाहिए। तो हम क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में अगर से आप वज़ीर आज़म बन जाएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे वसेब को अलहदा सूबे का दर्जा देगी? हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपने वसेब को हक दिलवाया जाए और ये जदोजहद, जैसे आपने कहा, गिलानी साहब के दौर में हमने सेनेट में भी करारदाद पास किया और अब यही वजह है कि हाँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया, नॉट जस्ट रेजोल्यूशन। आजकल रेजोल्यूशंस पास करते हैं, हम तो पूरा पार्लियामेंट एक्ट पास किए थे, सेनेट में इंट्रोड्यूस हुआ और उधर से आगे गया। आज भी हम अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम पंजाब के अवाम से, जनूबी पंजाब से के अवाम से, सबसे ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, वसेब के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब ना सिर्फ वफाक में, आप यहाँ सूबा पंजाब में अगर आप मुझे हुकूमत बनाएं तो फिर मैं असल मानों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाहिशात हैं वसेब के लिए, वसेब के अवाम के लिए, वो हम पूरा कर सकेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को सरप्राइज देंगे। आवाम अभी तक सचो पानी में है, इवन के सियासी जो लोग हैं वो भी सचो पानी में, पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते। सेनेट में हर दूसरे दिन जो है करारदाद मंजूर हो जाती है, पास भी हो जाती है कि इलेक्शन लेट किए जाएँ। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं इलेक्शन 3 महीने लेट किए जाएँ। फिर केपी में उनके ऊपर हमला करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें, क्या इलेक्शन हो भी रहे हैं या लेट की तरफ लोग जा रहे हैं या कुछ लोग भागना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बाकी जो भी चाहे, हम तो इलेक्शन कैंपेन आज से नहीं काफ़ी देर से चला रहे हैं और जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़ेह रूलिंग दिया है और कहा गया है कि पत्थर के लकीर में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में कि लोगों को अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए और उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। शरीफ जो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है, पीपल्स पार्टी उस पॉइंट को किस नजरिए से देखती है? वो उनका अपना कसूर होगा। मतलब किसने उनको कहा कि इतना गड़बड़ करे अपना पार्टी इलेक्शंस में? उनको मालूम था कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देते, थोड़ा सा होमवर्क कर देते। मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी कारकुन पे तरस रहा हूँ कि इनकी आप क़यादत देखें, इनके लीडर्स देखें कि इतना अहम वक्त है उनके लिए, वो किस किस्म का केस पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल में अगर एक सही केस प्लीट किया जाता तो शायद उनको उनका निशान मिले। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये अपने इलेक्शंस में गड़बड़ किया है, केस भी कमज़ोर प्लीट किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि पीटीआई को उनकी अपनी गलतियों की वजह से शायद वो दूसरा निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त मांगना पड़ेगा, मुझे आगे जाना है। आपको भावलपुर में हमारा पार्टी का कन्वेंशन है आज, आप सब शुक्रिया पाए मुझे।
सर हमने पहले कभी किसी वादा खिलाफी किया है? पीपल्स पार्टी जो है हमने अगर कायदे अवाम ने रोटी का और मकान का नारा लगाया तो ये 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां की तरह नहीं था। कायदे अवाम ने वो वादे पूरे किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए वो पूरे किए। जो हमारा 2007-8 का इलेक्शन की मंशूर था उसमें हमने अमल दरामद किया। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे अवामी मुआशी मुआहदा के 10 नुकात है मैं वो वादा पूरा करूँगा। जो है ना सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है, सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए जी, वो आप हमें दिखा दें इलेक्शन हो गए, बस इतनी सी बात है। वो एक कागज का टुकड़ा अक्कासी कर सकता है, वो कुछ और अक्कासी कर सकता है, वो ना भूले हुए आप ना भी दिया होता आपने सर्टिफिकेट तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती। असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूँ वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है? 2021 से आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन। चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया? अभी आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई, हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपके जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी। ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। अब या तो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें। आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है? वो ऐसी बात नहीं, वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक नया इलेक्शन एक्ट बना दिया। चलिए ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज दिखाते हैं तो दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखा दें जी कैश में किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। मैं तो अभी उस पर आया नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ उस पर, लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखें ऐसे। देखिए अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने खान साहब को कह दिया था कि आप इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, तो फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब ना दें तो हम सुनते हैं आपको, मगर फिर हमें सस्पेंड करना होगा जजमेंट को। हमने सस्पेंड नहीं किया जजमेंट को इसीलिए बिकॉज आई थॉट कि आपको इसको एंजाइटी होगी कि इसको जल्द फैसला हो जाए। बहुत ये एंजाइटी। तो अब आप इसको एक वो हमें सारे जो हमारी जो एंजाइटी है उसको आप अटेंड करें, ठीक है? आप अदरवाइज आप आर्ग्यू करते रहेंगे मगर फिर वो फिर आप ये ना गिला कीजिएगा कि क्यों सस्पेंड कर दिया, फिर वो उसका नहीं करूंगा ये निकलेगा। ठीक है जी, आई विल गो स्ट्रेट टू दिस। अब मेरा पहला पॉइंट सर खत्म हो गया, विच इज दिस के अकॉर्डिंग टू माय सबमिशन देयर इज नो जुरिसडिक्शन। अब मैं आपका पॉइंट पे आता हूँ, एड्रेस करना योर फीलिंग के इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक पेपर बुक दी है सर आपको इस वक्त। जी दिए ना? जी आपके सामने होगी सर, ये वाली ना? जी हाँ, आपने फाइल की है ना? जी ठीक है। अच्छा नाउ सर व्हाट हैपेंस इज, मैंने शुरू किया था कि अब 20 दिन में हमने इलेक्शन कराने हैं, तो ये 28 नवंबर को हमारे पास जो पहले जो हमारी एक द वे टू इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 इलेक्शंस हैं। एक है चेयरमैन का, वो ब्रेकिंग चेयरमैन का इलेक्शन है, वो सिंगल इलेक्शन होता है कि आप एक 1 against 1, और जो एक है पैनल इलेक्शन। पैनल इलेक्शन मींस कि आप अकेले नहीं आ सकते, आप एक पैनल लेके आएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मैं जनरल सेक्रेटरी। दिखाइए ना चेयरमैन का इलेक्शन दिखाइए जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पेपर बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं भी नहीं जो आपके इलेक्शन के प्रोसेस के होते हैं, जो कि हम सेटिस्फाई होना चाह रहे थे, वो है ही नहीं इसमें। चेयरमैन का दिखाएं, चेयरमैन, लेट्स स्टार्ट विद द चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये इसमें पेपर बुक में कहाँ है चेयरमैन का? नहीं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्शन होते हैं एक चेयरमैन का और एक पैनल का। हम पढ़ चुके हैं ना।
right up. ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. Thank you, sir. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے, وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی, پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ ایس بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to you. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے اکبر ایس بابر, یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے, وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریح پہ تو نہیں آئے ہو جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا, ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا, آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے, وہ نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں نا ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر, سو اس لیے وہ ہی ڈنٹ کم اینڈ ہی ڈنٹ گیو, ہی کیم, ہی شوڈ دس. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل, آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب, مگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور کیا 50,000 روپے کہاں ہے آپ کی, جب آپ الیکشن لڑنے کا فارم لے اگر رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں تو جمع ہوئے نا. پہلی چیز تو یہ ہے سر ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے, ملارڈز ہے, آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میرے پیپر بک جمع کرائیے جی, تمام جو کاغذ کہے تھے کدھر ہے, میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے, تو کہہ رہے آپ نے فارم لیا ہے 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں سی پی کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں. جی ان کو ہم سنیں گے بعد میں آپ کو دیکھ. جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے, آپ نے نہیں بعد میں دیکھ لیں, مگر آپ اپنے کنکلوڈ کریں. میں کر رہا ہوں سر. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر, جو آپ کے سامنے ہے NX 5 میں, جو آپ نے پڑھا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھے, جب یہ کہتے ہیں ہمیں کیا الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی, پھر آگے آنے جاتے جاتے. سو آن سر فرسٹ NX 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 it was announced in the public کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. So 28 November 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And NX 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day it was announced that chairman کون ہوگا PTI کا nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now sir 29th ko it was officially announced, in fact I was given the task to announce, which is NX 3, کہ آپ جو ہے سیٹرڈے کو اناؤنس کر دیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے. دس از ناؤ NX 3 on 29th November 2023. تو I announced it on the media. حالانکہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹی وی میڈیا پہ کریں, لیکن we for the sake of shortness of time announced it to the media on 29th November 2023. اینڈ ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن, اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں. دین یور لارڈشپ دس از ناؤ 29th November. دیر آفٹر سارا نیوز میں آیا. دین the next on 29th on the same day. Which page are you on? Now your lordship I've skipped NX 4. I've come to NX 5. نہیں NX 4 یہ کیا, یہ تو کوئی نیوز پیپر کی خبر ہے. وہ نیوز پیپر میں سارا آ رہا تھا کہ جی سیٹرڈے کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. نہیں, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as a chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter نہیں سر, وہ نیوز میں آیا تھا. میں بتایا تھا نا. نہیں تو یہ ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ دیکھیے ہم اب نیوز میں تو نہیں چلیں گے نا. ٹھیک ہے, I'm just saying کہ I'm looking at now the facts as they were. آپ دیکھیں, آپ برا نہ مانیے. جی جی
we're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. Ji. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई note हो जाएगा ना, I hereby nominate, कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर, वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate which was put up, let us put it this way, he was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी देखिए खान साहब is a founding member, you are an older member, senator. मतलब so these questions also arise. Tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says, I never nominated him then. चलें वो that is an observation, your lordship. I'm just taking your lordship through this now, the dates. So your lordship 29th को फिर 20 next page annex 5 is the 29th को the federal chief election commissioner who was appointed, he published a schedule, and the schedule जो है sir, it is with the approval of the election commission. Election commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम. कौन से पेज? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड, वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो नहीं भी क्या कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो मगर फिर अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान, एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you are playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. कच्चा सा कह रहे नहीं ज़रूरत उसकी. Federal Election Commission. The next page, and then so these are the relevant. Then on annex 6, your lordship will see Mr. Niazullah Khan Niazi is an old PTI member. Ji, he is an old PTI member. When did he join PTI? आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज. 2009. तो देखिए सब नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को. तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो देखिए whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ठीक है, तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना, लीड कैप्चर हम कहते हैं, पॉलिटिकल कैप्चर भी हो सकता है और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो, या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे. ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो. ठीक. That I mean I fully appreciate what your lordship is saying, so I'm taking your lordship through the factual position right now. जी फरमाइए, ताकि your lordship at least get satisfied कि एक इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, and not going into the nitty-gritty of it. Now your lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was nomination papers की copies हैं. So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms.
that were available. It's simple one pager. एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा. दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म. एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह फिर साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन. सो योर लॉर्डशिप कैन सी कि ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का. जी, दिस इज हिज पैनल. उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 दिसंबर 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया. Your Lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया. No other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है. जी, ये जीता है. ये जीता है. तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक, उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस वो अलग है सर, हर पैनल अलग से आया. इसी पर दिस इज द फॉर्मेट. 91 पर्सन्स आर इलेक्टेड एंड अपोज. 91 है. करेक्ट. आपने जो इलेक्शन को दिया एसीपी को, एवरी पर्सन हैज द सेम काइंड ऑफ फॉर्म. नहीं, पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना. आपकी पेपर बुक से आपने एक उमर अयूब खान, ये सेंट्रल था सर, एक एंड एवरी प्रोविंस, मगर जो टोटल नंबर ऑफ अनअपोज्ड कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी. टोटल पैनल्स थे सर, टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल. टोटल पैनल टोटल एक पैनल आया. 5 पैनल थे. उसमें जो जी आप सर 4 सूबों के लिए पैनल्स थे. 20 पर 20 बंद हो गए. उसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनअपोज आए 91. कौन से बाकियों का भी दे देंगे. एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को. ये है सेंट्रल पैनल का. इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते. क्यों? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके पैनल के फॉर्म में आ सकते हैं आप. सो इफ आई वांट फॉर एग्जांपल टू से कि जी मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का लड़ना है, आई कांट कम अलोन. तो ये जमहूरियत के मुताबिक है सर. ऐसे तो होता है कि पैनल होता है, मगर फिर भी पैनल को वोट तो करते हैं ना लोग. अब जैसे बाहर के भी इलेक्शन होता है, सबको पता है ये फलां का पैनल है, फलां का पैनल, मगर सब इंडिविजुअली फाइल करते हैं. इंडिविजुअल है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है. तो ये कुछ समझ नहीं आई बात. वो तो फिर भी ठीक है, उनकी वाबस्तगी एक नजरिया, सोच या एक शख्स के साथ है, वो तो समझ आ गई. मगर इलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना, सबको इंडिविजुअली लड़ना होता है. पैनल के 3 मेंबर आ गए, 2 रह गए. ऐसे आइडियली तो ये होना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. नहीं, ऐसी अजीब सी बात है. तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है. 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल, खत्म, इलेक्शन हो गया. सर आपको याद होगा, आई डोंट नो आप क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, बट कुछ क्लब्स में होता है लाइक जिमखाना, जहाँ पैनल आता है और उसमें वो आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट, लाइक जमात इस्लामी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. पैनल आते हैं ठीक है, मगर इसके अंदर आपके पास वो 91 जो है ना, वो भी नजर आ रहा है. वो भी अभी दे देते हैं. 13 आदमियों का आपने ये लगाया है जो उमर अयूब खान साहब का जो पैनल है, बस वो भी आपको दे देते हैं. 91 का पता ही नहीं है जो अनअपोज है, वो भी आपको दे देते हैं. ठीक है. नाउ सर कमिंग बैक टू दैट, आपके मुताबिक कितने पैनल लड़े इलेक्शन? टोटल सर 5. एक सेंट्रल और 4 सूबे, और एक पैनल हर सूबे से. ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना. अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर. अभी आ रहे हैं. आप दुरुस्त कह रहे हैं. मैंने रिक्वेस्ट कल की थी, बट वो आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर. आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम. मैंने कहा तो था, लेकिन वो आए नहीं अभी तक. आ जाएंगे थोड़ी देर में. इनफैक्ट आपकी पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है. कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है, अभी आ जाएंगे, मौजूद नहीं है. अब ये वाला एक आपने एक आ गया, बाकी 4 के भी आ जाएंगे.
अभी आ जाते हैं। मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को कि अभी करते हैं। हमारे ईसीपी को सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया, कल देख लेते हैं। हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है, ईसीपी के रिकॉर्ड में है ये हमारे पास है। ईसीपी का रिकॉर्ड I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it. उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals, हम उन कहना नहीं चाहते ना, because you are your own person, या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं। एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है, तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे। इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे। वो तो सारे ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना। ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना। अली जफर साहब आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है, मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. But if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. अब बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे। I mean, if he, I mean, this says, show, what can I say? नहीं, I think मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा। Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है। Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं, ना पूछे तो फिर Absolutely, that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have we ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said hold the election. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand the case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने? ठीक है सर. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. टाइम बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So एक मिनट. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर अपील पर बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है। इस वक्त खाने का वक्फा लिया गया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। दिल बनास्पति।